राजीव जी एकदम सामने देख जी थोड़ा सा और कैमरा एंगल ओके। मैं एक्चुअली मेरा दिल घबरा रहा है कि मैं आपको राजीव जी बुलाऊं या फिर आपको प्रफुल्ल बुला दूं। बहुत अच्छा हो गया आपको प्रफुल्ल बुला दूं। प्लीज राजीव चलिए मैं आपसे क्योंकि प्रफुल्ल क्या खिचड़ी लोग बन भी गई, लोगों ने खा भी ली, नकार भी ले लिया। अभी लेट्स टॉक अबाउट दिस। अरे आपको अभी भी मालूम नहीं शायद पड़ा है, लोग अभी भी आपके बहुत बड़े वाले खाने इंक्लूडिंग भी। थैंक यू फॉर गिविंग सच रोल्स एंड सच प्लेसेस। आपसे ये जानना चाहती हूँ राजीव जी, आपने थिएटर किया है, गुजराती में बहुत बड़ा नाम है, आप खिचड़ी के जरिए लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ऐसे में आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तब आपको ओटीटी में क्या नजर आता है जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है? आपके खुद के नजरिए से हो सकता है, घर वालों से भी आपको कुछ चीजें आपने नोट करता है ना, हर एक्टर वैसा कुछ किया हो? सबसे पहली बात तो ये कि ओटीटी में पहली बार मैं काम कर रहा हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, तो मुझे तो बहुत ब्राइट फ्यूचर लग रहा है और आई एम हैप्पी टू वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो और क्या इसकी कुछ अच्छाइयाँ आपको जो नजर में आती हैं पिछले कुछ साल में? इतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं हूँ ये प्लेटफॉर्म पे कि उसकी बारीकियाँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो मैं तय कर सकूंगा या उसके बारे में कुछ कह सकूँ। Let me go ahead more and then I'll be able to, I'll be in that position to say about it. Hi, last question. Yes, thank you for doing that on my behalf. Thank you. Hi, Disha Jasoria from Filming Gyan. Instincts की बहुत बात चल रही है. Tammy and Avinash, a question for you. Personal life में are you guys very instinctive? फ्रेंडशिप हो गई, प्यार हो गया, क्या आप इंस्टिंक्ट पे बहुत जाते हैं या इज इट वेरी प्रैक्टिकल फॉर यू गाइस? So I ever believe that instincts get shaped up by your conditioning, your understanding and exposure of life, your own opinions, your own. So I think eventually in life you are instinctive, but it comes from your own exploration of life, your own ideas, your own opinions. मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, but in life generally you ask me, it's my instincts that take over, but there is some thought to it I would like to believe. I'm extremely instinctive, like my entire being works on instinct. Sorry, that's मूल वृत्ति. मूल वृत्ति. I think मूल वृत्ति के बिना शायद ही मैं I think मैंने अपने लाइफ के सारे सबसे बड़े डिसीजंस अपने मूल वृत्ति से ही लिए हैं और आज भी ऐसे ही लेती हूँ। आई फील लाइक दैट्स दिमाग आपको क्वेश्चन कराता है, लेकिन आप जब मन में आपको एक आपका मूल वृत्ति आपको एक अजीब किस्म का क्लैरिटी देता है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग से वो सवाल जवाब करने बैठ जाओगे तो वो आपको यहाँ वहाँ हर जगह ले जाएगा, लेकिन मूल वृत्ति नॉर्मली एक ही बात बोलती है, 2-3 बातें नहीं बोलती। तो दैट्स नाइसर टू ट्रस्ट समथिंग दैट सेज वन थिंग। थैंक यू सो मच। Thank you to all. जी लास्ट क्वेश्चन जीवी साहब से जी। जीवी साहब, हमने आपको मोहब्बत फिल्म में देखा, अविनाश में देखा, सब में आपने अलग अलग रोल की। मेरा नाम शिवजी रामपुरी जर्नलिस्ट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे अच्छे रोल निभाए हैं, अलग अलग भूमिकाएं की हैं, लोगों को बहुत पसंद है, तो आपके मन में कोई ऐसा रोल करने का है कि जो आपका ड्रीम्स हो कि मैं ये रोल करूँ, वो बताइए। कहीं कोई बैठा हुआ लिख रहा है, अच्छा कुछ ऐसा लिख रहा है जो उसे पता है कि इसने किया नहीं, तो अभी तमन्ना वो मेरे तक पहुंच गया तो वही होगा। अच्छा, अभी यानी दिल में तमन्ना है उस रोल को करने की? बहुत सारी तमन्नाएं भाई साहब, अभी तो खड़े हुए हैं, डराना बाकी है। फिलहाल हमारी तमन्ना बहुत सेटिस्फाइंग है क्योंकि कास्ट सही है, तो क्या कभी मिसकास्ट हुआ, कुछ कभी लगा कास्टिंग गलत हुई आपसे? नहीं, फॉर्चुनेटली अभी तक के तो नहीं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट I've come across some brilliant actors in my journey, right from my first film to now. It doesn't matter if they're debuting or they are veterans. The ability to surrender to the material that we are approaching them with, that's what
makes these films what they are. So in this case also, I'll just take a moment to share with you guys that we had readings. When people say that it's ek lamba take tha and we spend time, there's a lot of effort that goes before you land on set. You do readings with your actors, and we had readings with all three of them and Rajeev individually, and they were really primed and prepped to land on the set and just deliver what's asked of them. And it's only when you sort of are prepared to that degree. अविनाश को ज़्यादा prepared होता था तो वो आके disturb करना शुरू कर देता था लोगों को. बाकी everybody was on their toes, and yeah, that's the reason we managed to make what we eventually managed to make. Thank you. Thank you. We have 2 more questions. Yes, please go ahead. Your stories are captivating, you know, obsessive and mysterious. So, in one line, how mysterious is this? Would you explain? Without revealing the climax. How mysterious? Yeah. Very mysterious. I said one line, not 2 words. It is very mysterious. Anyway, the title is also very captivating. Thank you. सिकंदर का मुकद्दर, पर मेरे ज़हन में मुकद्दर का सिकंदर आ रहा है. आना चाहिए. हाँ. That was the reason why we had this title, because it's a play on a film that I grew up on, loved it, and I think our entire generation sort of loved that film, and it's in a way a tribute, in a way an ode to that particular film, but nothing to do in terms of genre. Yeah. मेरी मूल वृत्ति, अपनी मूल वृत्ति को टटोल के बताएंगे कि आपके सिकंदर ने देखा है कुछ इसमें से? अपनी मूल वृत्ति का डायरेक्टर है कि वो आखिरी 5 पेज नहीं देते स्क्रिप्ट के, आपको लगता है कि उनके अलावा ये फिल्म किसी ने देखने की, आपके सिकंदर की बात कर रही हूँ मैं तो यहाँ पर सारे की सारा मेरी टोली है सिकंदरों की, यहाँ पर किसी ने नहीं देखी है. डिस्कस तो किया होगा, दिखाने ही नहीं दिया. कुछ डिस्कस किया होगा अपने सिकंदर के साथ. हम सेट पे इतना डिस्कस कर रहे थे, हमें जरूरत नहीं पड़ती कहीं और जाके डिस्कस करने की. Thank you, Lupika. Thank you so much. Thank you. It won my heart in a way that I have. It reminds me हम फिल्में क्यों बनाते हैं और हम किस शिद्दत से फिल्में बनाते हैं, क्योंकि फिल्में हमें उस प्रोसेस से प्यार है. And when I met so it was just wonderful to see that, you know, we don't celebrate technical crew as much as we celebrate the actors, but honestly these films can't be made by some very strong, insanely strong technical crew. So thank you. Wonderful film and a wonderful experience. Thank you, Tamannaah, and you quite literally brought that moment alive in front of us visually. So thank you for transporting us there. Thank you. And to Avinash sir as well, a big shout out. He's not here, but I'm sure he'll be watching this later. But a big shout out to him as well. Arvind sir, thank you so much. And next question. Hi. Whoever's the mic, if you can, that will be great. Yes, hi. Right next to you. Hi. Hi. This is Kunal here from IWM Bus. Avinash, my question is for you. You know, obviously, it's been a very, you know, sense of filmography so far, considering OTT and theatrical so far. But you obviously were in, you know, all the news for the right reasons, when Laila Majnun released, and you know all the love that has got now. You made a love on romantic there, and it's been a while. You know, then you've had intense roles in one way or another. So, is there going to be a side of that in one way or another in this one? Is that going to happen? I mean, you're talking about being a lover again? Yeah, like a lover on romantic, you know. So real life में खेल लेता हूँ. No, but honestly, I mean, it's a great podium to ask this question. Netflix and Nigel sir are sitting right here. We should put this question to them. I am always looking forward to parts that I can enjoy and really give my all to. That's what really excites me. So for now, I'm enjoying whatever has come my way. This one is something that I'm sure that people are going to enjoy. Find it very relatable, and at the same time, like he said, it's an edge of a seat thriller, which I think will create an experience which will be different from all the other work that you would have seen of mine. And I hope you enjoy it. So 29th November. Hello. Rajeev ji, my question to you here. If you could please rise, then they'll be able to see. If you could stand up, thank you. That way they'll be able to identify. To my left or to my right? Cameraman sir,
are behind me, so I Okay. don't want to stand up. Rajeev ji, I'll sit down and will ask you. जी हिंदी में हिंदी में पूछूं? ओके। राजीव जी, आपके कैरेक्टर्स में हमेशा हमने एक यूनिक प्रेजेंस देखी है आपकी, तो आपका ये जो कैरेक्टर है मंगेश देसाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एंड व्हाट रियली एक्सेप्ट यू टू साइन दिस रोल एंड हाउ वाज द ओवरऑल वर्किंग विद नीरज जी? अरे bottom line is it was a privilege for me to work with दिग्गज जो हमारे डायरेक्टर बैठे हुए हैं, नीरज पांडे साहब. For me it was a privilege to work with him, you know, क्योंकि बेसिकली आई एम थिएटर एंड टेलीविजन एक्टर. गिनी चुनी 4-5 फिल्में की थी इसके पहले मैंने, जिसके बारे में लेसर सेड द बेटर. दिस वाज अ स्पेशल फिल्म फॉर मी, क्योंकि जो किरदार मेरा है मंगेश देसाई का, वेरी इनोसेंट, बहुत सीधा साधा सिंपल इनोसेंट आदमी है, 60 साल का, बड़ी शिद्दत से अपने एम्प्लॉयर के लिए इज शोकेसिंग डायमंड्स इन एग्जीबिशन. एंड वन फाइन डे ही इज देयर इज डायमंड रॉबरी एंड ही इज turning point है इसकी लाइफ में, because he's cornered and he's targeted as one of the convicts, one of the ROP. And despite of all this turmoil and he's stood by his fellow suspects, Kamini and Avinash. So lot of twists and turns in character. And अभी ज्यादा कहता मंगेश इनोसेंट दिखता है या है? बेसिकली भी हुआ तो ये मात्रा है, ये दिस इज डेफिनेटली अ स्पेशल फिल्म फॉर मी. सर आपके जवाब ने हमको ऑलरेडी एज ऑफ द सीट कर दिया. जब इतना बता रहे थे तो लगा था आरोपी अब बता रहे हैं. I was like, Ruchika, Thank you. If you have the mic, you can raise your hand and then, yeah, please. Hello. Hi. Hi, this is Seema here. Hi, Seema, on the right. Here, Seema. Yes. Ruchika, I want to ask you, among the various thrillers, successful thrillers that Netflix has had, what sets this one apart from the others, and what are the elements that will keep us hooked to this? Thank you, Seema ji, for the question. Many of the elements that will keep you hooked are on stage with me. But I think besides that, in terms of the offering that we've always had, the year we've had so far, from a very intense film like Sector 36 to Maharaj to Amar Singh Chamkila earlier this year, to Wasim Dilruba, when we're finally coming to the close of the year with Neeraj sir's film, the world is very, very immersive. Like all of them have been saying, it's an edge of the seat, and very often we've had films that have certain twists and turns, but the level of immersiveness that one feels when you enter Neeraj Pandey's world is unparalleled. I must also share a very interesting anecdote that when he sent us the script, and it was about 11 o'clock at night, he sent it in the morning, and I got back home, I was like, I'm reading a Neeraj Pandey film tonight, and the last 5 pages were missing. And I had no idea what the climax of the film was, and I texted Devi, and I texted, so I was like, I can't sleep, I couldn't, and in my head I had my conspiracy theories, and I was like, this is how I think it's going to end. But the fact that the film had a residue and it stayed with me long after it happened was what I thought really set it apart. He spoke about honesty through the film, about ambition, about greed, and that is what I think sets a Neeraj Pandey film apart from any other thriller that there is out there. Thank you. Tamannaah ji, on your left.